हिमांशु शिंदे। इंजीनियरिंग फिजिक्स सीखने की इस वीडियो सीरीज़ में आज हम बात करेंगे ग्रुप वेलोसिटी पे। ठीक है, अगर आप नए हैं इस चैनल पे और ये वीडियो सीरीज़ आपने स्टार्टिंग से नहीं देखी है, ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप स्टार्टिंग से देखिए। ठीक है, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो उस पूरी सीरीज़ को ये नहीं कि आप जब मैं समझा रहा हूँ तो उसी टाइम पे लिखो। ठीक है, समझना आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए जितनी भी आपकी पीडीएफ है वो मैंने आपको वीडियो के एंड में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और उसको आप लिख लेना। ठीक है, लेकिन अभी जो है वो आपका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो अभी सिर्फ समझिए और जब वीडियो एंड हो जाए तो यार डिस्क्रिप्शन में चले जाना, उसमें लिंक आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख लेना। जो भी आपकी पूरी नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हमारी ग्रुप वेलोसिटी पे। When two or more than two waves having same frequency and same phase, that is constant phase difference, traveling in the same direction, then due to principle of superposition, they produce bundles of waves. These bundles of waves are known as wave packets. ठीक है, तो यार जैसे कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जब आपकी टू वेव्स जो होती हैं जिनकी सेम फ्रिक्वेंसी होती है और सेम फेज होता है, जब वो एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, देन ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जब आपकी बंडल्स ऑफ वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, वो जो बंडल्स ऑफ वेव्स होती हैं वो आपकी वेव पैकेट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो यानी कि बंडल्स ऑफ वेव्स इज ऑल्सो नोन एज वेव पैकेट्स। द वेलोसिटी ऑफ वेव पैकेट्स इज नोन एज ग्रुप वेलोसिटी। तो यार सिंपल सा ग्रुप आपको समझ में आ रहा होगा कि एक कोई भी पैकेट्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ पीपल, जैसे आप कहते हैं कभी ग्रुप्स जो होते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से यार जब आपकी जो वेव्स होती हैं उनका जो ग्रुप होता है, ठीक है, और जब वो एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं एक ही वेलोसिटी के साथ, ठीक है, तो वो आपकी क्या कहलाती हैं, सेम वेलोसिटी या सेम फ्रिक्वेंसी आप कह सकते हैं, तो वो आपकी कहलाती हैं ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, मैथमेटिकली group velocity can be defined as the ratio of change in angular frequency to the change in propagation constant. तो यार सिंपली ग्रुप, अगर मैथमेटिकली हम बात करें ग्रुप वेलोसिटी की, तो वो आपका चेंज इन एंगुलर फ्रिक्वेंसी टू द चेंज इन प्रोपोगेशन कांस्टेंट। सो ग्रुप वेलोसिटी को हमने यहाँ पे जी लेट कर लिया है। ठीक है, और जो आपका एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी एंगुलर फ्रिक्वेंसी की। ठीक है, तो वहाँ पे भी हमने ओमेगा से डिनोट किया था, तो जो आपका एंगुलर फ्रिक्वेंसी है वो आपका ओमेगा हो गया। ठीक है, सो चेंज इन एंगुलर फ्रिक्वेंसी टू द चेंज इन प्रोपोगेशन कांस्टेंट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ग्रुप वेलोसिटी. Then let us consider two waves, that is y1 and y2. So these are two waves y1 and y2, as we have seen earlier in the previous video. So the equation of wave is a sine omega t minus kx. So this is the first equation of the y1 wave. Then for the y2 wave we have considered a sine omega dash t minus k dash x. So this is the second equation of y2 wave. Then by principle of superposition, y equals to y1 and y2. You may be familiar with the superposition principle in your class 11th and 12th. Okay, so y equals to y1 and y2. Then y equals to a sine omega t minus kx plus sine omega dash t minus k dash x. So as we can see x is common, so हमने उसको बाहर शिफ्ट कर दिया. ठीक है, then y equals to 2a sine, then by the formula sine a plus sine b. Okay, then omega plus omega dash upon 2t minus k plus k dash upon 2x and cos omega minus omega dash 2t minus k dash upon 2x. So this is by the formula sin a plus sin b. Then omega plus omega dash upon 2 is roughly equals to omega, then k plus k dash
upon 2 is roughly equals to k. Then omega minus omega dash upon 2 is roughly equals to uh, d omega, that is we have considered as a differential, is upon 2. K minus k dash upon 2 is roughly equals to dk upon 2. uh, as this is very small quantity, therefore we have considered d omega upon 2 as similar. K minus k dash upon 2 is also a very small quantity, therefore we have taken dk upon 2. Okay, then y equals to 2a sine omega t minus kx cos d omega t by 2 minus dkx by 2. As you can see, uh, by the principle of superposition, we have put it the value of omega plus omega dash by 2 equals to omega. So in place of this we have put it omega and t as it is, then minus kx. From here, in place of k plus k dash by 2 we have put it k, then cos d omega t. So in place of this we have put it d omega by 2 minus dk by 2 x. As you can see, dk x by 2. Then y equals to 2a sine omega t minus kx cos. So d omega by 2 minus t minus dk upon d omega x. Then y equals to 2a sine omega t minus kx d omega t minus x, this x. Then in place of dk upon omega we have put it g. As you can see, g equals to d omega upon dk. So you can remove this t, this is only dk, uh, this is dk. Okay, so you can remove this t. So this is the equation of resulting wave moving with group velocity. This is the diagram for the wave packet. This is the bundles of waves. Okay, so that's all for the group velocity. So if you like the video, don't forget to hit the like button, subscribe the channel for more such videos. See you in the next video. Thanks for watching.